Good evening, everyone. Good evening, everyone. Myself, Meta Jain, Secretary WRC, welcome you all on today's program on capital market, the way forward. In the loving memory of late Shri Sunil Patodia sir, who was Central Council member. Today is the first death anniversary of Sunil Patodia sir, but he will live forever in our memories. So before moving further, I request everyone to please put your hand on your heart for the ICI motto. य एष सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता Thank you. Friends, I recognize the presence of our past sir, speaker of today's session, Murtaza Kachwala sir, my council colleague. Further, I request to our chairman, Murtaza Kachwala sir, please address to the participant. Thank you, Shweta. A very warm good afternoon to all the participants who joined us today. I first thank our Honorable Past President C.A. Prafulla Chajet sir. Sir, thank you for joining us today on this session. I also thank the speaker, Sumeet Bagadia. Sumeet ji, thank you very much for taking out time from your busy schedule. We know you are always there every day. Your comments come and people look at you and listen to you on the capital market, and for all the good work that you're doing. And today we again have this session on capital market, the way forward, and to listen from the expert. And Sumit, as I said, to share his valuable knowledge with us. Thank you, Sumit ji, for that. Let me also thank the Secretary WRC, Shweta Jain and Rudesh Pankhania. And as we get on with the session, I thank about 400 plus registrations are there. And although we have so many people joined in, some new will join in as we proceed ahead. Since today is the first death anniversary of our beloved past chairman, C.A. Sunil Patodia ji, we also remember him. And such a noble personality he was. Whenever anyone wanted any support, he was always ready. And my experiences on whenever we referred anyone for anything, he would always be going out of his way and helping them, and no one would have returned empty-handed from his door. So I would remember him fondly. And with that, I now request Honorable Past President Sri Prafulla Chajet sir, your guidance and your views, sir. Over to you. Sir, you are on mute, sir. Yes, sir. Very good afternoon to everybody. The chairman of the Western India Regional Council and his entire team, and the learned speaker for this particular afternoon session. First, let me start this being the memorial lecture in honor of our beloved late C.A. Sunil Patodia. Friends, let me tell you, he being the Central Council member, he was Central Council member and he was also Sir WRC for many long years. Many of us know him as an individual, but since I had worked very closely with him, I will, concur with whatever Murtuza sir, the chairman WRC said. He was such a noble person and always ready to help.
in spite of being in public life, because there's so many people will always approach to him or anybody for that matter, but he will never say no to anyone, be it a needy student or be it a other chartered accountant or a student who doesn't need the financial things but needs help from the ICI. And he was the one person, not only at the ICI, his activities at the Lions Club also and other charitable work. And probably that is the reason when the chairman has organized this particular meeting, we fondly remember him. Coming back to the now, since life has to go on, because the Sunil always used to say, swasth mast rest raho. So we have to be always busy in our schedule, and therefore I now come back to this particular meeting, which is being organized by the Western India Regional Council. I also take this opportunity to congratulate Murtuza and his entire team for their entire 1 year dedicated service to the profession. During various tough time, they had the physical meeting, web meetings. They had the World Congress being hosted by the WIRC in the city of Mumbai, etc. And they have done tremendously good work. So congratulations to Team WIRC, of which Sunil was the integral part. He was the past chairman of the WIRC and always there too. And I'm sure wherever Sunil is there, he will be happy to see the activities of the WIRC. Coming to the speaker of the this particular afternoon, capital market is always a very important session for the chartered accountants, and we have our dear friend Sumeet who is going to speak. Of course, so many media channels keeps him busy morning, afternoon, because the stock market is one area which will always keep on moving. But nevertheless, Sumeet has agreed, because again he was very closely associated with Sunil, and I'm quite sure whenever anybody can take Sunil's name, nobody will say, at least in this particular profession, no for anything. And I think in spite of Sumit was not available, etc., but he ensured that at least on a Zoom call he was there. So with this, I once again remember my dear friend and of course the leader of the past leader of the profession, dear Sunil Patodia ji, and I also hand over back to the Shweta and Murtaza ji for further proceedings. Thank you so much for inviting me here on this very important meeting organized in honor of late Sunil Patodia ji. Thank you so much. Thank you. Thank you, Praful sir. That despite your busy schedule, you came even just for a while. Thank you. Thank you so much. So moving further, we have with us Mr. Sumit Bagadia as a speaker of today's afternoon session. He is an MBA in finance, has an enriching professional journey in the broking industry. Started his career with one of the leading broking firm in India, Sher Khan Limited, and is currently leading the technical research space in Choice Broking Private Limited as an executive director. His current presence on social media and huge number of followers speaks for his presence in the broking industry already. And he donned the hat of being in the top 10 spokesperson in India, mentioning by a third-party survey, Clipbite. So with a wide media presence of more than a decade, he is prominently featured market expert on top Indian business television channels, expert panelist with Z Business television channel, where he regularly shares his market outlook and trading picks. He has appeared on 7 prominent channels, such as including G Business, other than CNBC Awaaz, ET Now, CNBC Bazaar, which is on a Gujarati channel, Bloomberg, NDTV Profit, and CNBC TV 18. Also have given various types of articles in print media like Economic Times, Afternoon, Now Bharat Times, Business Standard, Financial Chronicle, DNA, etc. With Institute, he has conducted, I think, 100 plus seminar with WIRC, including ICWAI, Lions Club, Clients Awareness Meet at various locations in India. So with this brief introduction, once again, I welcome you, Sumit ji, at the platform of WIRC. Thank you so much for coming, and over to you. Thank you very much. Thank you very much, Shweta ji. Thanks for such a nice introduction and thanks for the welcome. Also, thank you very much to Murtuza ji, Praful ji, and you yourself for having this session in the memory of Sri Sunil ji Patodia. As Praful ji already said, that I was very well associated with him, and
we were in touch on regular basis. ऐसा almost in a day or in a gap of 2-3 days. Regularly we used to meet. In fact, in the office we used to have lunch together many times. In fact, almost every alternate day or every third day we used to have lunch together. So it's very difficult to digest and believe जो हुआ वो, and it's been 1 year, but life का fact है, ये चीज पॉसिबल है, होना है और सबके साथ होता है. तो things must go on, things must move on. So with the उनको याद करते हुए, उनकी मेमोरी के साथ, I think we should start with today's session. So first of all, thank you very much to all of you, and thank you very much to all 190-200 participants who have joined in till now. I will start with the today's session, where we will understand the markets, we will understand the index, we will understand few sectors, we will understand few stocks, where what can happen in next couple of months, in next 6 months to 12 months time horizon. I will also share one PPT through which you will be able to understand that what I am trying to speak on index, sectors and stocks. So let's start with the today's presentations. I will share the screen. Please enable the share screen. Yes, sir. I hope सबको मेरा screen visible है, सबको screen दिख रहा है. This is the This is the market outlook, and here we will be seeing few charts. First of all, we will talk about Nifty. I hope, I believe, and I'm sure जितने लोग यहाँ पे अभी attend है, 200 plus लोग, mostly all must be looking after the markets, all must be seeing the markets. Many of you or all must be having the investment part or major investment in the stock market. So it's very important to understand the market move, very important to understand the sectoral move, very important to understand the stocks specific moves. Markets यहाँ से क्या लगता है, कहाँ जाने वाला है, क्या होने वाला है, all these are very important aspects. अगर आप लोग खुद involved नहीं होंगे तो आप लोगों के clients भी involved होंगे, as all of you are CA, so CA community, CA fraternity के अंदर this is the part and parcel of life. जैसे जो भी आपके clients या आप लोग खुद money earn करते हैं, तो money earn करने के बाद where you should invest, we have only few limited options to invest in. There are few asset class where we can invest in. One is fixed deposit, FD, जहाँ पे सब लोग करते हैं, commodities market, equities market and real estate market. So real estate market में it's very limited people who invest in because huge amount of corpus is required. So लोगों के पास एक घर हो जाए तो ही बहुत होता है, तो extra investment difficult होता है. So real estate को थोड़ा सा साइड में करते हैं तो बचता है commodities market, that is gold and silver, and then comes equity markets. Gold and silver को store करने के लिए there is a difficulty, so limited investment goes in gold and silver, and the major investment goes to that is in equity markets. Why? Because equity markets are easy to transfer, easy to liquidate, easy to invest, easy to move in, easy to move out, and at the same time, because of the volatility, people are tempted towards the volatility, and those who are learned in the market, those who understand the market, they try to capture the moments which market shows on regular basis. So I feel those who are able to understand the market on regular basis, those who are taking the market on regular basis, for them it would be very interesting to understand that how the market reacts, how the market behaves, and markets के अंदर आने वाले समय में क्या होने वाला है. तो आज अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. This is sorry. सुमित जी, थोड़ा सा वॉइस में कुछ बीच बीच में डिस्टरबेंस आ रहा है, आई थिंक सो, बिकॉज कुछ मैसेजेस आए चैट बॉक्स में. तो Okay, just a minute, let me check.
हेलो, आई थिंक अभी क्लियर आना चाहिए आवाज. हाँ, ऐसे तो थोड़ा बेटर ही है, बट बीच बीच में कहीं आ रहा था, बट अभी ठीक लग रहा है. यू प्लीज. ओके, आई थिंक देयर मस्ट बी सम, शायद नेट प्रॉब्लम होगा तो फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है. हाँ, ठीक है. गो अहेड. Yeah. So we were discussing about Nifty. Now Nifty is presently quoting at around 17,900 levels. Now if you look at this chart, ये chart के अंदर last couple of months, last 3 months says that the Nifty has been showing downside move from higher levels. 18,500 18,600 के आसपास से निफ्टी के अंदर फॉल आ रहा है. In between we are seeing some pullback, some bounce back, but overall we are seeing a correction in last couple of months. So now looking at the chart, it seems that the major support is placed at around 17,500 level. These are the 17,500 levels जहाँ पे अभी कर्सर मूव हो रहा है. So if these levels are taken away, the fall can extend and we can see a move till 17,300 levels. These two are immediate support for Nifty. Nifty is consolidating. If you see in last 10-15 days, Nifty has been showing bit upside move. Also, the Nifty has been consolidating in a range of around 17,600, 700 on lower side to 18,000, 18,100 on higher side. This is the patch where Nifty has been consolidating. Till now, the chart says that some profit booking or some correction can be seen. Why? Because globally interest rate rates are increasing. Rate hike जब भी होता है, that is not good for markets because the major liquidity, major money goes into the fixed deposit. Globally जो rates अभी देखने को मिल रहे हैं, या इंडिया में भी अभी जो fixed deposit के rates आए हैं 8% के आसपास, these are very good return on investment. So major money is moving into the fixed deposit. जैसे ये rate hike stop होगा, we would see, जैसे ये rate hike stop होगा, we would see a good move, a good rally in the equity markets. मैं देख रहा हूं बहुत सारे चैट पे रिप्लाई भी आ चुके हैं. That voice is clear. Thank you very much for replying. मैं बीच में आप लोग के चैट्स देख भी रहा हूं. So now taking a perspective of 3 months, 6 month and 12 month time horizon, immediately the chart says, जो लोग टेक्निकल चार्ट्स नहीं समझते उन लोग के लिए बहुत अच्छा है अभी टेक्निकल चार्ट्स को समझना एंड देखना. जो लोग समझते हैं उनको और क्लैरिटी आएगी. मेजर पीपल आर इन्वॉल्व इन द फंडामेंटल्स इन दी एज आप लोग सब सीए हैं, सो मेजर पीपल नो द बुक्स, बैलेंस शीट, P&L, बट एट द सेम टाइम विद द फंडामेंटल्स वी शुड आल्सो नो द टेक्निकल एस्पेक्ट. रोड पे जब गाड़ी चला रहे हैं, रोड अच्छी है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, बीच में खड्डे आते हैं, यू टर्न लेना होता है, तो ये सारी चीजें चार्ट्स टेक्निकल सिखाते हैं, फ्रॉम विच वी कैन अंडरस्टैंड where we should book profit, where we should average, where we should initiate fresh long positions, या कब इस स्टॉक के अंदर या इस चार्ट के अंदर मोमेंटम बिल्डअप होने वाला है और यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा, ये चार्ट्स के ऊपर बहुत इजीली और बहुत जल्दी पता चल जाता है. So this Nifty is consolidating. Some correction can be seen till 17,500 or 17,300 levels. ये लेवल्स जब नीचे में अगर टूटेंगे 17,300 तो उसके बाद करेक्शन और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है एंड एक अच्छा गिरावट आएगा अगर ये नीचे में सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं. तो जब तक नीचे में सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटेंगे, 17,300 के लेवल्स जब तक नहीं टूटेंगे तब तक द ट्रेंड इज पॉजिटिव. इन बिटवीन सम वॉलेटिलिटी विल बी सीन. वॉलेटिलिटी वैसे भी आजकल बहुत ज्यादा हो रखी है मार्केट्स में. वी आर सीइंग अ मूव अराउंड 200 to 300 पॉइंट्स ऑन रेगुलर बेसिस एंड दिस इज अ नॉर्मल मूव इन निफ्टी नाउअडेज. सो निफ्टी के अंदर ये मूव अभी रेगुलरली ऐसे ही रहेगा. आप लोगों को ये समझना है कि निफ्टी के अंदर अगर आप लोगों को काम करना है या इंडेक्स में आप लोगों को काम करना है तो दिस इज द नॉर्मल मूव व्हिच यू विल सी ऑन रेगुलर बेसिस. 200-300 पॉइंट के मूव नॉर्मल हो जाएंगे. सो इस मूव को देख के घबराना नहीं है. दिस इज द नॉर्मल वॉलेटिलिटी व्हिच वी विल बी seeing in next couple of weeks, in next couple of days or in next couple of months. ये volatility के साथ ही जीना होगा और ये volatility के साथ ही markets में काम करना होगा. Now when we talk of Nifty, 17,300, 17,500 is an immediate support. When it comes to the resistance is placed at around 18,200 on higher side and the second resistance is placed at around 18,400 on higher side.
ये दो रेजिस्टेंस जब एक बार ऊपर में ब्रेक होंगे तो उसके बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ बनेगा एंड एक बड़ी रैली हमें ऊपर की तरफ इंडेक्स में दिखाई देगी। मैं आप लोगों को एक लाइव चार्ट भी दिखाता हूं। आई विल शो यू द लाइव चार्ट। दिस इज द लाइव चार्ट। लाइव मतलब आज markets are not working, but this is the actual chart software which shows the movement of the market of the index. That was the presentation. Now this is the 200 DMA level of Nifty. ये जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, this is the 200 डे मूविंग एवरेज जो 17,300 के पास है। 17,300 के ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। This says that markets अभी तक बुलिश है। कोई बेरिश मूव बीच में छोटे मोटे आते हैं तो that should be used as a buying opportunity. Now Nifty has immediate support at around 17,300 and 17,500 levels. These two are immediate support levels for Nifty. अगर ये लेवल नीचे पे ब्रेक होते हैं तो फिर एक करेक्शन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। फिर एक अच्छा करेक्शन आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। जब तक ये करेक्शन नहीं आता है, you should see any correction or dip as a buying opportunity. The immediate hurdle for Nifty is placed at around 18,200 levels. This is the trend line which has first resistance 18,200 in Nifty. The second resistance would be 18,400 levels. यानी दिसंबर के हाई के आसपास का ये दो लेवल जब ऊपर में टूटेंगे तो निफ्टी के अंदर एक बड़ा मूव यहां से ऊपर की तरफ बनेगा। आप देखिए ये सितंबर का लो है, ये फेब के लो है। मार्केट्स में एक अच्छा रैली आया, वी हैव सीन सम करेक्शन और अभी वापस यहाँ पे ये जो पैच है, दिस पैच सेज दैट दिस इज कंसोलिडेटिंग। ये कंसोलिडेशन ओवर होगा या छोटा मोटा करेक्शन आएगा, उसके बाद इसमें ट्रेंड क्लियर होगा। दिस वाज द चार्ट ऑफ निफ्टी। आई विल शो यू द बैंक निफ्टी चार्ट आल्सो। दिस इज अ बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी की तरह ही मूव कर रहा है। इफ यू सी from last couple of months, from the month of December, we are seeing some correction in Bank Nifty also. 44,000 के लेवल्स का हाई लगा के 44,000 लेवल्स के आसपास का हाई लगा के we are seeing some correction in Bank Nifty, and recently we have seen a low of around 39,490, 39,500 levels. Now Bank Nifty can also give some correction. Now, Bank Nifty can also give some correction. If you see, this is the trend line which has been drawn from the top, and this says that it's facing resistance here, it's facing resistance here, it's facing again, it has again faced the resistance here. 2 days back, we have seen that the Nifty has touched the trend line, and from there we are seeing some profit booking. Now there is a possibility that we might see levels of around 40,000. Yeah, 39,000. These two are immediate support levels for Bank Nifty. 40,000 या 39,000 के आसपास का सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। 40,000 40,000 तक के करेक्शन वी कैन सी इन बैंक निफ्टी इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, बट इन लॉन्गर टर्म टाइम horizon any such dip or correction in bank nifty should be used as buying opportunity. And on higher side, the first resistance for bank nifty is placed at around 41,800 levels, and the second resistance is placed at around 41,260 levels. This is the actual chart of Bank Nifty. So ये जो lows है, यहाँ तक Bank Nifty एक बार नीचे आने का ट्राई कर सकता है. There is a possibility that we might see some correction in Bank Nifty till these levels. Now, if you see, this is the June 2022 low. From there, we are seeing a one-way rally. We have seen a move till September. After that, we saw some correction. Then again, we saw a one-way rally till December 2022. And from December, we are seeing some correction. So after every rally, we are seeing a correction of around 3-4 months, and then again we are seeing a rally. Now this is called
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यानी अपना बेस नीचे से शिफ्ट करते जा रहा है बैंक निफ्टी. सो नाउ दिस chart indicates that if any such correction or dip which comes in bank nifty from present levels, then that should be used as a buying opportunity. And on higher side, the resistance, once the resistance is taken away, we could see a good rally. We could see a good rally in bank nifty also. This is a bank nifty resistance. 41,800 is the immediate resistance. 41,800 is taken away. We could see moving bank nifty moving towards 42,650 levels. हमें आने वाले समय में लगता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बैंक निफ्टी शुड आउट परफॉर्म, बैंक निफ्टी शुड रैली, एंड इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, in next 6 to 9 months or 12 months time horizon, we should see a good rally in bank nifty, and from here on we should see a good rally. So any dip or any correction in bank nifty should be used as a buying opportunity. Longer term time horizon chart of bank nifty suggests that we are in a bull run. Same is the case with nifty. Nifty और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट यही सजेस्ट कर रहा है कि ओवरऑल हम एक तेजी के ट्रेंड में हैं. इस तेजी के ट्रेंड के अंदर कोई भी डिप आते हैं, कोई भी वॉलेटिलिटी के चलते कोई भी करेक्शन देखने को मिलता है, दैट शुड बी यूज्ड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी. नाउ this volatility can continue, this volatility can increase. Why? Because VIX is volatility index which is trading at around 12-13 levels, यानी ऑलमोस्ट ये लोअर लेवल्स के पास आ चुका है. VIX जब इंक्रीज होता है, जनरली वी सी वॉलेटिलिटी एंड जनरली वी सी करेक्शन. VIX अगर इतने नीचे के लेवल से अगर रिबाउंड मारता है, रिबाउंड करता है, एंड इफ यू सी सम शार्प अपटिक, some sharp up move, then that could take some profit booking, some correction in index and in stocks. Already we are seeing a correction in the stocks. If you see in last couple of months, major sectors, major stocks have given a correction. Now, if we see jump or surge in the VIX volatility index, that could again take profit booking or correction in major sectors, major stocks and major indices. So इस volatility के लिए आप prepared रहिए. As an opportunist, one should always try to figure out where we are getting the opportunity, and one should always try to grab the opportunity. इस मार्केट में पैसा वही कमाता है जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए तैयार रहता है. अपॉर्चुनिटी जब आती है तब डर भी साथ में आता है. उस टाइम पे जो डरता नहीं है और फियर से दूर रह के जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, वो मार्केट से अच्छा पैसा कमाता है. ये जो छोटा सा मैंने कुछ लास्ट 1 ईयर का चार्ट दिखाया है स्क्रीन के ऊपर, इफ यू सी दिस चार्ट, बीच बीच में इसमें बड़े बड़े करेक्शन आए हैं. दिस रेड कैंडल इंडिकेट्स अ करेक्शन इन द मार्केट. सो 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक कंटिन्यूस करेक्शन देखने को मिले हैं. बट ऐसे करेक्शन के बाद वापस एक तेजी आई है. अच्छा, मंदी आप जब भी देखोगे मंदी ज्यादा दिन टिकती नहीं है. मंदी और करेक्शन don't last for a longer period of time. And if you see the teji, if you see the bullish move, that lasts for weeks or months. यानी कितने हफ्तों तक तेजी हो रही है, कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक तेजी हो रही है, that you can see in the chart. So whenever such correction comes, one should be ready to grab the opportunity, so you can take the benefit of this up move, you can take the benefit of this bull move, you can take the benefit, and you can make money and you can make money of the investment which you have made in the markets. That is only and only possible if you grab the opportunity when that is available. So now overall view on Nifty and Bank Nifty is positive. To sum up both the charts,
सॉरी आई थिंक बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. I hope all can see me. Yes, yes, we can. Yeah. So now a few sectors to look at in next couple of weeks, in next couple of months, and in next 1 year. Bullish sectors to look at is Nifty IT, Nifty Infra, Nifty FMCG, and Nifty PSE. Now we will also see the sectoral charts. This is Nifty IT. This is Nifty IT. Nifty IT says, this is a weekly chart. This says that there was a correction in the index. And after a correction, we are seeing a very good move from the month of July. This presentation shows the chart of last 2 years, in which we have seen that in last 2 years, we have seen some correction. First, we had seen a very good upside move. After upside move, we have seen some correction. And after a correction, now we are again seeing an upside rally in Nifty IT. Nifty IT has stopped. Nifty IT has stopped the correction phase. Major stocks which were in correction phase have stopped, and now they are slowly and gradually moving up. Nifty IT अभी 31,000 के पास का लेवल्स है. आप ये देखिए, इसके अंदर एक ये पैटर्न बन रहा है जिसके अंदर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक करने वाला है. Once Nifty IT is able to break the multiple resistance, we could see a tremendous rally and a move in IT sector and IT stocks. IT stocks के अंदर this index is playing a reversal from the lower levels. RSI is also sustaining above 50 marks, which is again a positive sign for the index. We are seeing a mean reversal in the Nifty IT. Now this rally, if sustains, we could see a very good move from here on. So once the breakout is seen, we could see a very good rally in index, and if the index moves, we could see a good move in major IT stocks. So I think those who are investors for a longer term time horizon, जो लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो लोगों को IT सेक्टर पे ध्यान रखना चाहिए. मेजर फ्रंट लाइनर स्टॉक्स जो एक करेक्शन में अभी आपको लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं, उन स्टॉक्स में आपको आने वाले 6 से 12 महीने के लिए निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. यू शुड इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 to 12 months and 2 to 3 years, क्योंकि IT सेक्टर एक करेक्शन के बाद रैली का आप शुरुआत करेगा. दिस सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म एंड दिस सेक्टर शुड परफॉर्म. 31,000 के जो लेवल्स है निफ्टी IT के पास, ये जैसे ही ब्रेकआउट होकर सस्टेन करेंगे 2-4 दिनों तक ऊपर में, वी कुड सी ए रैली. एंड इफ यू सी द चार्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल, ये पैच निकलते ही ऊपर में रेजिस्टेंस 34,000 एंड 36,000 के पास है, यानी a move of around 10% to 20% in index. Whenever any index, like we are talking about Nifty IT, if the index moves up by 10%, 15%, 20%, उससे ज्यादा मूव स्टॉक स्पेसिफिक आएगा. ऐसा नहीं है कि इंडेक्स में 10% का मूव आया तो स्टॉक के अंदर 10% ही मूव आएगा. इंडेक्स के अंदर 10% मूव आया तो स्टॉक्स कैन रैली 15%, 20%, 25%, 40%, 50%, डिपेंडिंग ऑन दी कंपनी, डिपेंडिंग ऑन दी परफॉर्मेंस. एक सेक्टर में अगर 10 स्टॉक है तो 10 के 10 एक जैसा परफॉर्म नहीं करते. कोई ज्यादा परफॉर्म करता है, कोई कम परफॉर्म करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द कंपनी balance sheet, because of the company fundamentals, and because of the interest of the people in that particular stock. I hope all can see the Nifty IT chart now. Nifty IT chart is there on the screen. सौरभ सेठी जी और घनश्याम जोशी जी, आपने लिखा है कि बैंक निफ्टी चार्ट दिख रहा है. This is the Nifty IT chart which I am sharing on screen.
Yes. Okay, Sumit Jain, I have received your reply. Thank you very much. अच्छा लगता है जैसे जनरली व्हेन आई गिव द प्रेजेंटेशंस आई एम फिजिकली देयर एंड ऑडियंस इज आल्सो फिजिकली देयर, तो उससे रिएक्शन का पता चलता है. बट जनरली आप वेबिनार पे करते हो तो ना किसी को देख पाते हैं, ना एक दूसरे के रिएक्शन पता चलते हैं. सो दिस चैट इज द ओनली ऑप्शन व्हिच कैन डिलीवर योर रिएक्शन और व्हिच कैन से व्हाट यू आर फीलिंग. सो अच्छा लग रहा है जैसे ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स आ रहा है ये देख के. सो नाउ निफ्टी आईटी का जो मैंने बताया कि निफ्टी आईटी के अंदर यहां से जल्दी ही ब्रेकआउट आएगा. वॉलिटिलिटी जारी रहेगी, करेक्शंस आएंगे, बट जल्दी यहां से एक बढ़िया मूव, बढ़िया ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा. सो बी प्रिपेयर्ड, गेट रेडी. इफ एनी फॉल, एनी करेक्शन यू सी in next couple of weeks, months, then that should be used as a buying opportunity. Ghanshyam Joshi ji, you have written, still you are seeing the bank nifty chart only. मैं निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा रहा हूं स्क्रीन पे. Yeah, now you can see Nifty IT. Okay, okay, great. Thank you very much. Thanks for the response. So वापस से I will explain. This is the chart which is of Nifty IT. यहाँ पे आप देखिए, these are multiple resistance, 1, 2, 3, 4. This is the fourth time where Nifty IT has faced resistance around 31,000, 31,100 levels. So this says that this time, if the index is able to break this resistance line, we could see a rally towards 34,000 or 36,000 in next couple of months. ये एक पैटर्न भी है. This is a shoulder, this is a head, and this again is a right shoulder. ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा जब ये ऊपर में ये जो नेकलाइन ड्रॉ करी है ये ब्रेक होके इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है. तब once you see the breakout, we would see a rally, and ये जून से लेके अभी यानी फेब तक लास्ट 8 मंथ्स में निफ्टी आईटी के अंदर कंसोलिडेशन और साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है. सो ये ब्रेकआउट जैसे ही आएगा तो जितने 8 से 9 महीने लगे ब्रेकआउट कंसोलिडेशन में, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा in next 3-4 months only you will see a good rally where you can see a decent move in most of the IT stocks. Now this resistance, if the resistance is not taken away, we could see some profit booking till 29,500 or 29,000 levels. ऐसा अगर कोई भी डिप आता है, ऐसा अगर कोई भी डिप आता है तो that should be used as a buying opportunity in Nifty IT. Sumit Jain, will it be a breakout of inverse head and shoulder? Good. अच्छा लगा कि आपको चार्ट्स के बारे में पता है. सी ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस ब्रेकआउट कैन कम. जैसे ही मार्केट्स बुलिश होंगे, जैसे ही मार्केट्स के अंदर एक डिसेंट रैली स्टार्ट होगा और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ा सा कूल ऑफ होना स्टार्ट होगा इन नेक्स्ट 3 मंथ्स और इन नेक्स्ट 6 मंथ्स टाइम होराइजन, वेरी सून वी शुड सी अ ब्रेकआउट. और ब्रेकआउट आने के बाद आप ये मान के चले वी आर गोइंग टू सी अ मूव ऑफ अराउंड 10% to 20% इन निफ्टी आईटी इंडेक्स. ऐसा होने पे स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बढ़िया और एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी. तो कौन से स्टॉक्स, एक स्टॉक का चार्ट भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा आईटी सेक्टर के अंदर से, विच विल गिव यू आइडिया कि चार्ट्स के ऊपर कैसे ब्रेकआउट आता है और कैसे इनको रीड करना होता है. सो आई होप दिस इज अ निफ्टी आईटी चार्ट विच ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट चार्ट इज निफ्टी एफएमसीजी. Varda Joshi, you have asked question on considering global recession, IT sector will have impact. See, because of global
सिनेरियो ओनली आईटी सेक्टर हैज नॉट परफॉर्म. अभी मैं आपको और चार्ट्स दिखाऊंगा जो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ ऑन स्क्रीन आई एम शेयरिंग द चार्ट ऑफ निफ्टी एफएमसीजी 4561 के आसपास, 45617 45617 के आसपास का क्लोजिंग है. आई होप आप लोग को ये दिखाई दे रहा है. निफ्टी एफएमसीजी. Now if you see this chart, this is continuously in uptrend. This is moving in a पॉजिटिव अपवर्ड चैनल. ये ऊपर में राइट साइड में जो दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी है उसके बीच में जो ये कैंडल्स मूव हो रहे हैं, दैट इज अ पैरेलल अपवर्ड चैनल which is formed in Nifty FMCG. This Nifty FMCG is moving above all moving averages like 20-day moving averages, 50-day moving averages, 100-day moving averages, 200-day moving averages. RSI is also at comfortable level. Overbought zone में अभी तक पहुंचा नहीं है. So now what I can sense by looking at this chart is that Nifty FMCG is already strong. We are seeing a decent rally. After every rally, we are seeing some consolidation, some correction, some profit booking comes in. Once that is over, we are again seeing a rally. Now in the last towards right, we are seeing this parallel channel which has formed in Nifty FMCG. Now this shows that once the breakout of upward channel is seen, this is the upward resistance line of Nifty FMCG. Once these levels are taken away, we could see this can also be termed as a flag formation, but generally flag formation में इतना consolidation होता नहीं है. But left side में this is a pole, which from here, if you can see my cursor, ये जुलाई से लेके यहाँ तक जो बना है सितंबर तक, that is a pole. उसके बाद ये consolidate हुआ है. Now again, if you see this trend line breakout somewhere at around 46,000 levels, 46,100 levels, तो उसके बाद एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा. सो ये जो पैरेलल चैनल का नीचे में सपोर्ट है, दैट कम्स एट अराउंड 44,000 लेवल, 44,000 लोअर सपोर्ट, 46,000 अपर रेजिस्टेंस. A 2,000 move after this parallel upward channel breakout is seen. We can see a move of around 2,000 points from 46,000 levels. यानी अगर ऐसा होता है, पॉजिटिव चैनल का ब्रेकआउट आता है, तो 2000 पॉइंट्स का रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा. एंड इन दैट केस वी कैन सी अ रैली टिल 48,000 or 48,500 levels in Nifty FMCG. So Nifty FMCG is very strong. A rally can be seen in most of the FMCG counters. Any dip, any correction or fall in sector in stocks should be used as a buying opportunity in Nifty FMCG. Now the next chart is Nifty PSE. I hope आप लोग को भी स्क्रीन पे निफ्टी पीएसई का चार्ट दिख रहा होगा, पब्लिक सेक्टर का. ओके, रिप्लाई आ गया है मुझे. Now please look at this chart very. I hope the chart is clear. इस चार्ट को एकदम अच्छे से देखिए. ये चार्ट के अंदर, this is a weekly chart. चार्ट्स के अंदर there are various
वेरियस टाइम होराइजन के चार्ट्स होते हैं, आर्ली, वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, 15 मिनट, 30 मिनट. This is a weekly chart of Nifty PSE. This chart is looking strong. ये पिछले 8-10 महीने से कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो के अंदर ट्रेड कर रहा है. ये भी सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है. This has also performed Nifty in last 1 year. In last 1 year, this has outperformed Nifty. आप देखिए जितने भी PSU स्टॉक्स हैं, वो सब स्टॉक्स ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में दिखाया है. This shows that this index is strong. इस इंडेक्स में जो स्टॉक्स आते हैं वो स्ट्रॉन्ग है. आप ये आराम से NSE की BSE की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं. और अगर आप लोग किसी भी ब्रोकिंग हाउस के साथ जुड़े जहां पर आपका डीमेट अकाउंट है या जहां पर आप इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर यू कैन आस्क योर RM ऑल्सो, यू कैन आस्क योर रिलेशनशिप मैनेजर ऑल्सो. कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं. एक दो स्टॉक्स के नाम मैं बताऊंगा. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि यहाँ पे आज जो भी डिस्कशन हो रहा है कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है. दिस इज जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन. दिस वी आर डिस्कसिंग टू इंक्रीज अवर नॉलेज. This we are seeing that in last couple of months, in last 1 or 2 years, what has happened in the market, जिसको देख के we can try to capture the move in the future. I hope you can see me. ये कोई भी रिकमेंडेशन मान के मत चलिएगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से आज. We are just taking this session to increase our knowledge, to gain knowledge and to understand what has happened in the market and what can happen in near future. So now this chart says, this index chart says that this has outperformed in the market and it has outperformed the Nifty also. Why? Because major stocks have given a very good rally, and from the lower levels, we have seen that the stocks have been given a return of around 200, 300, 400% from the lower levels. Sumeet Jain, you have asked that chart period depends upon investment horizon of an investor. No, see, if you want to invest for a longer period of, see, people use various period depending on the trading pattern. Those who are intraday or short-term, players in the market, they generally go for daily chart or hourly chart. जो day to day intraday करते हैं, momentum play करते हैं, swing play करते हैं, जिसको लंबा नजरिया रखना है, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, वो लोग लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के चार्ट देखते हैं. फॉर एग्जांपल वीकली चार्ट और मंथली चार्ट, जिससे आपको ये पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में किस तरह का मूव इस स्टॉक के अंदर आएगा. व्हेन यू आर सीइंग अ लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन चार्ट, उसमें आपको एक ब्रॉड रेंज और बड़ी रेंज मिलती है. उस बड़ी रेंज के अंदर आपको फॉल और करेक्शंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. So when you are an investor, you should see a longer term time horizon chart like monthly chart, weekly chart, where you will be able to get the trend of that particular sector, particular stock, and depending on that, depending on the direction of the chart, you can take the positions. If the charts are bullish and indicating that the bullish move can be seen in next 6 to 12 months time horizon, then you should buy that stock, and in every dip or every correction, you should accumulate that stock. Vikram Modi ji, Kirit Malankar ji, 200 DMA is very, very important in charts. 200 DMA के अंदर आपका ट्रेंड डिफाइन होता है. 200 DMA के ऊपर जनरली स्टॉक्स या सेक्टर होते हैं. Those are
बुलिश सेक्टर, बुलिश स्टॉक 200 DMA के नीचे जो होता है जनरली उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वो ट्रेड कर रहा है, मतलब वो एक साल से कंटिन्यूसली वीकनेस के ट्रेंड में है। तो जब तक उसका ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है, यू शुड अवॉइड बाइंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक। वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट वन शुड ऑलवेज एवरेज द क्वालिटी स्टॉक्स। जो स्टॉक क्वालिटी नहीं होता है उसको एवरेज भी नहीं करना चाहिए। सो अगर क्वालिटी स्टॉक है और उसका होराइजन आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल का है, तो ऐसे करेक्शंस के अंदर यू शुड इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस। While taking fresh positions, you should see whether the stock is trading above 200 DMA, 200 day moving average. DMA का मतलब जो लोग नहीं समझते, 200 day moving average, 200 डे का मतलब करीब करीब एक साल हो गया। एक महीने में 20 से 22 वर्किंग डे होते हैं, तो 230, 240 वर्किंग डे पूरे साल के हुए, तो एक साल का चार्ट के ऊपर कैसा मूव रहा वो दिखाता है 200 DMA। तो 200 DMA के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है और वेल सस्टेन करके पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, दैट मीन्स वो चार्ट स्ट्रांग है। ये बहुत सारे जो आपने सेल, एनटीपीसी, भेल आप देखिए नीचे के लेवल से कितना ऊपर आ चुका है। ऐसे बहुत से स्टॉक है, अगर हम नाम लेने चाहेंगे तो बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये भी ऐसे स्टॉक्स है जो लोअर लेवल से एक अच्छी रैली दिखा चुके हैं। तो जो भी ये पीएसयू, पीएससीज है, इनके अंदर आने वाला समय अभी और भी मजबूत है। इनके अंदर यू शुड इनिशिएट पोजीशंस व्हेनेवर यू सी सम करेक्शन। Now PSE, Nifty PSE is trading at around 4422 levels, यानी 4400 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 4400 के आसपास ये अभी ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इन लास्ट 1 month, 2 month and 3 months, if you see, it has faced resistance at around these levels. So once now these levels are taken away, we could see a fresh rally in this sector, and accordingly these stocks which are involved in this sector will give good move in next 6 to 12 months time horizon. ये स्टॉक, ये सेक्टर में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 4 times it has faced the resistance. Now this time if it gives a breakout, we could see a minimum of 500 to 600 points move from the levels of 4500 levels, यानी 5000 के आसपास के लेवल निफ्टी पीएससी में फिर आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। नीचे में जो इसका सपोर्ट है दैट इज 4170, 4100 के आसपास। सो यू शुड टेक अ नोट ऑफ दीज लेवल्स। निफ्टी पीएससी के बाद नाउ आई एम शोइंग निफ्टी इंफ्रा। आई होप सबको निफ्टी इंफ्रा का चार्ट दिखाई दे रहा है। This is a weekly chart of Nifty Infra. This is a weekly chart of Nifty Infra. Nifty Infra में आप देखिए ये राइट साइड में there is a rounding formation. This is early indication of cup and handle formation. Cup and handle formation. ये जो rounding pattern है that is cup. एंड उसके बाद जो राइट साइड में जो ये पैटर्न बन रहा है, नाउ दिस इज मूविंग टुवर्ड्स हैंडल फॉर्मेशन। सो अगर ये ऊपर में ये यहां से मूव होके अगर यहां तक आ गया और ये ब्रेकआउट आ गया तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। अब ये सेक्टर का भी एक और एक बात, दिस इज ऑल्सो मूविंग अबव 20 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे मूविंग एवरेजेस। तो कहने का मतलब ये जितने स्टॉक्स चार्ट्स अगर कंटिन्यूसली ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलते हैं, नाउ दैट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट दिस सेक्टर, दिस स्टॉक्स आर इन पॉजिटिव ट्रेंड। जो स्टॉक्स, जो सेक्टर इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड नहीं करता है, यानी उनके अंदर करेक्शन देखने को मिल रहा है। नाउ निफ्टी इंफ्रा क्लियरली सेज दैट दिस वीकली चार्ट क्लियरली सेज दैट दिस इज वेल अबव ऑल द मूविंग एवरेजेस, व्हिच इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द सेक्टर। आरएसआई के अंदर भी पॉजिटिव मूव भी देखने को मिल रहा है। आरएसआई इज आल्सो शोइंग स्ट्रेंथ। पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़ा मूव निफ्टी इंफ्रा के अंदर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 5100 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ऊपर में इमीडिएटली 5400, 5500 निफ्टी इंफ्रा का ऊपर में रेजिस्टेंस है।
once the resistance levels are taken away, यहां से आप मान के चलिए 500 से 800 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ मिनिमम निफ्टी इंफ्रा में देखने को मिलेगा। अगर ऐसा होता है देन इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, इन नेक्स्ट 24 मंथ्स ये एक बड़ा मूव दिखाएगा और आने वाले समय में इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ा मूव स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। After seeing few sectors, now we will see the charts of few stocks which are showing strength, which are showing strength. So ये जो कुछ सेक्टर है जो हमने एक एक डिस्कस किए, लाइक फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी, सो एक टीसीएस का चार्ट वी विल टेक एग्जांपल। उसके बाद गोदरेज सीपी एफएमसीजी के अंदर, कोल इंडिया एंड इंफ्रा में एलएनटी। अब 4 सेक्टर के बाद जो हमें अभी अच्छे लग रहे थे उन सेक्टर्स के बाद अब हम 4 स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, 4 स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे, वो क्या सजेस्ट करते हैं और उनके अंदर क्या समझ में आता है। नाउ दिस इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस सबको पता होगा, वेल नोन नेम है, आईटी कंपनी है, टॉप आईटी कंपनीज में से है। इसका अभी प्राइस चल रहा है 3500, 3501 टू बी वेरी प्रिसाइज। नाउ इन लास्ट 6 months we have seen a rally of around from the lows of 2900 to 3500, यानी 600 पॉइंट का मूव 6 महीने के अंदर नीचे से टीसीएस में देखने को मिल चुका है, जो कि करीब करीब 20% का मूव होता है। सो नाउ जस्ट इमेजिन कि जहां पे सब तरफ इतना ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, आईटी सेक्टर वाज कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ डाउन ट्रेंड और लास्ट 3-4 महीने के अंदर पता भी नहीं चला और टीसीएस जैसा दिग्गज स्टॉक ने 20% का मूव लोअर लेवल से ऊपर की तरफ दिखा दिया है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज टॉकिंग और शोइंग यू द चार्ट्स ऑफ निफ्टी आईटी, कि निफ्टी आईटी में कैसे नीचे से रिवर्सल आया है और इसने घूमना स्टार्ट कर दिया है। नाउ दिस इज द अर्ली इंडिकेशन कि ये जो 1-1.5 साल का करेक्शन था आईटी सेक्टर में, ये पूरा हो चुका है। वी आर सीइंग सम rebound, pullback, bounce back in TCS. Very soon, we are going to see a breakout, and in next couple of months, in next 1 or 2 years, we are going to see a decent rally in most of the IT stocks. TCS का एग्जांपल लेते हैं। TCS ने सितंबर से एक रैली दिखाया, it moved up till 3500, 3400 levels, छोटा सा करेक्शन आया 3200 levels तक। Now again it has given a up move, जिसमें रिसेंट का स्विंग हाई, दिस वाज द स्विंग हाई, ये ब्रेक हो चुका है और कल का क्लोजिंग 3500 के पास है। 3500 के क्लोजिंग में ये लास्ट 6 मंथ से रैली तो जो आया वो ठीक है, लेकिन 1 साल के हायर लेवल्स पे ऑलमोस्ट ये आ चुका है। लास्ट ईयर अप्रैल, मार्च अप्रैल के अंदर ये भाव थे, जो अभी इस साल फेब के अंदर ये भाव अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। सो 1 साल के हायर लेवल पे टीसीएस आ चुका है। सो अब आने वाले दिनों में कभी भी अगर करेक्शंस आते हैं तो दिस शोज कि ये छोटे मोटे करेक्शन में यू शुड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द आईटी स्टॉक्स। ये नीचे में लो से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, जिसने फर्स्ट लो को टेस्ट किया जो सितंबर के आसपास था, सेकेंड लो को टेस्ट किया जो दिसंबर जैन के आसपास का बना था, और अब ये उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ आईटी सेक्टर स्टॉक जिसके अंदर हमने लोअर लेवल से रिबाउंड देखा है और एक अच्छा डिसेंट रैली लास्ट 5-6 महीनों में देख लिया है। नाउ दोज हु आर आस्किंग क्वेश्चंस, जो लोग चार्ट समझते हैं वो लोग और भी सेक्टर और भी स्टॉक्स के चार्ट्स जाके आप चेक कर सकते हो। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, बीसॉफ्ट, परसिस्टेंट, कोफोर्ज की कौन सा चार्ट ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कौन से चार्ट में ज्यादा मोमेंटम है। जब रेसिंग होती है तो सारी गाड़ियां एक साथ नहीं चलती, जबकि सब एक ही रेस में होते हैं। कोई फर्स्ट होता है, कोई सेकंड होता है, कोई थर्ड होता है, कोई फोर्थ होता है। सेम इसी तरीके से जब तेजी स्टार्ट होती है किसी सेक्टर में तो सारे उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स एक साथ नहीं चलते। कोई फर्स्ट नंबर पे होता है, कोई सेकंड नंबर पे होता है, कोई थर्ड नंबर पे होता है, कोई फोर्थ नंबर पे होता है। ऐसे करके ये आपको और हमको सिलेक्ट करना है कि
लंबी रेस का घोड़ा कौन सा है और कौन सा स्टॉक ज्यादा तेजी से भाग रहा है कंपेयर टू द पियर्स। अपने पियर से कंपैरिजन में कौन सा स्टॉक ज्यादा तेजी से भाग रहा है वो हमको डिसाइड करना है और उस पर हमें दाव लगाना है और उसको हमें पकड़ना है। वी शुड कैप्चर द फास्ट मूविंग स्टॉक सो दैट यू कैन मेक मनी, you can make money faster compared to the others who are making in the market. वो समझने के लिए you need to understand the fundamentals of the economy, you need to understand the fundamentals of the sector, you need to understand the fundamentals of the company, and then you need to understand the technicals, the breakouts of that particular stock so that you can take timely entry, exit in that particular stock. Now ये TCS का बात हुआ। TCS के बाद एक और एक चार्ट देखते हैं। मैं देख रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और वन एनोनिमस अटेंडी हैज रिटर्न, सेल को नहीं करना है सेल क्योंकि मेटल भी दिखाने वाला है जादुई खेल। अच्छा लगा आपका ये राइमिंग देख के, पढ़ के, और मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद मुझे क्लोजली वॉच और फॉलो भी कर रहे हैं, इसके लिए राइमिंग आपके पास से देखने को मिल रहा है। तो अच्छा लगा ये राइमिंग। और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक दो स्लाइड्स और बाकी है, लेट मी कंप्लीट फ्यू स्लाइड्स, उसके बाद वी विल टेक फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं लेंगे तो प्लीज आप ध्यान रखना कि स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम ज्यादा नहीं लेंगे। ओके रंगेश मालपानी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। नाउ एफएमसीजी गोदरेज सीपी 942 के आसपास का अभी प्राइस है। गोदरेज सीपी 942 के आसपास का अभी प्राइस है। सी द चार्ट, दिस चार्ट क्लियरली सेज दैट इट्स ट्रेडिंग नियर द रेजिस्टेंस लेवल, और ये रेजिस्टेंस सितंबर के अंदर फेज हुआ था, उसके पहले जैन फेब 2022 के आसपास फेज हुआ था, यानी वी आर ऑलमोस्ट नियर दी 1 ईयर हाई लेवल इन गोदरेज सीपी। तो जैसे ये 940 का या 960 रुपए का ब्रेकआउट इसके अंदर आएगा, वी कुड सी और वी आर गोइंग टू सी अ डिसेंट रैली इन गोदरेज सीपी। स्टॉक एक अपवर्ड राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर आरएसआई भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है, स्टॉक के अंदर नीचे में बाइंग भी देखने को मिला है। सो ये बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारे इंडिकेशन, बहुत सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत सारे इंडिकेशन है जिसकी वजह से ये लगता है कि दिस स्टॉक शुड आउट परफॉर्म इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। 1000 रुपीज तो ये इमीडिएट दिखाएगा ही। 1000 रुपीज का लेवल अगर ब्रेक किया तो ये 100 से 150 रुपए की चाल आने वाले समय में ये सॉरी बीच में थोड़ा सा मेरा गला भी खराब है, सो प्लीज बेयर विथ मी। और कंटिन्यूसली वेबिनार में 1-1.5 घंटे तक बोलते रहना इज अगेन ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, और फिर एक कंप्यूटर स्क्रीन को देख के बोलना उससे भी बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज आई एम इन ए हैबिट ऑफ टॉकिंग पीपल फेस टू फेस, फिजिकल अपीयरेंस के साथ। सो एक कंप्यूटर स्क्रीन को देख के बोलते रहना इज वेरी डिफिकल्ट, सो प्लीज बेयर विथ मी। एंड 15-20 मिनट और लगेंगे प्रेजेंटेशन खत्म होने में, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे आप लोगों के। सो नाउ दिस सेक्टर इज लुकिंग गुड टू मी। दिस सेक्टर, उसमें से एक स्टॉक ये निकाला है जो यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। सो आई थिंक यू शुड वॉच दिस स्टॉक। जो लोग चार्ट्स देखते हैं वो लोग उसको देखना स्टार्ट करें, जो लोग नहीं देखते वो भी देखें। और एफएमसीजी सेक्टर के अंदर और भी स्टॉक्स हैं जो करेक्शन में लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं। आई हैव सिलेक्टेड दिस स्टॉक बिकॉज दिस इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स, और इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ब्रेकआउट आएगा और ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का बनेगा। नीचे में करेक्शन में छोटा मोटा डिप आ सकता है, मार्केट्स का फॉल अगर आएगा तो इन स्टॉक के अंदर भी करेक्शन देखने को मिलेगा, और ये स्टॉक भी नीचे में 880 या 900 के लेवल्स तक आ सकता है। तो ऐसा अगर कोई भी डिप आता है तो उस डिप में आई थिंक दिस स्टॉक
one should initiate long positions in this stock. So now after Godrej CP, जो next था, that was PSE. जिस तरह के क्वेश्चन और सवाल आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर पीपल आर इंटरेस्टेड इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और मुझे अच्छा लग रहा है कि 250-250 लोगों के आसपास लोग अटेंड कर रहे हैं और उसमें इतना बढ़िया लोगों का रिस्पॉन्स है और लोग चार्ट्स भी समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड भी है, क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, कुछ मेरे जार्गन्स, मेरे सनायम्स भी यूज कर रहे हैं जो मैं जनरली सोशल मीडिया या टीवी पे यूज करता हूँ, और कुछ लोग हेल्थ का भी परवाह करते हुए उन्होंने मेरे गला खराब है उसके बारे में भी लिखा है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा है और देख के इट्स फीलिंग वेरी नाइस. So now we will understand Coal India. I hope you can see the chart of Coal India on screen. Coal India is quoting at around 217.50, 217 रुपए 50 पैसे. ये जो अपवर्ड राइजिंग चैनल बना हुआ है, इसके अंदर कोल इंडिया ट्रेड कर रहा है. कोल इंडिया जनरली मूव होता नहीं है, जैसे आईटीसी का नाम था कि आईटीसी चलता नहीं है और एक साल के अंदर आईटीसी कहां से कहां पहुंच गया, ऑलमोस्ट डबल होने आ गया, वैसे ही कोल इंडिया के अंदर भी जनरली मूव करता नहीं है. बट इफ यू सी इन लास्ट 1.5 year वी हैव सीन वन वे रैली इन कोल इंडिया. कोल इंडिया नीचे के लेवल से यानी 125 के लेवल से वन वे रैली आ चुका है और अभी ये 250-260 तक तो जाके भी आया है. नाउ कोल इंडिया इज कोटिंग एट अराउंड 210-15 लेवल्स के आसपास, 217 टू बी वेरी प्रिसाइज. दिस इज द अपवर्ड राइजिंग चैनल, जिस चैनल के अंदर कोल इंडिया अभी ट्रेड कर रहा है. फर्स्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ऊपर नीचे, अगेन इट फेस्ड रेजिस्टेंस नियर द चैनल, देन अगेन डाउनवर्ड चैनल का लोअर लेवल पे इसने सपोर्ट पे टेस्ट किया. नाउ अगेन अपवर्ड मूव, चैनल का अपवर्ड रेंज पे इसने टेस्ट किया, फिर ये करेक्शन आ रहा है. अब ये हो सकता है 200 रुपए तक के लेवल दिखाए, हो सकता है यहीं से घूम जाए मिडल ऑफ द चैनल के आसपास से. इस बार अगर इसने चैनल का अपर बैंड तोड़ा यानी 250-260 के लेवल टूटे, देन वी कुड सी अ रैली टुवर्ड्स 300-350 लेवल्स इन कोल इंडिया. यानी आने वाले समय के अंदर कोल इंडिया में यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनता है. कोल इंडिया यहां से ऊपर का एक बढ़िया मूव दिखा सकता है. आई थिंक पीएससी सेक्टर्स के अंदर और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इसी तरह से वन वे मूव दिखाया है इन लास्ट 1.5 year. We have seen a tremendous rally in last 1.5 year in PSE, PSU stocks. ये रैली अभी भी जारी रहेगी because we feel that markets are strong and markets will continue to move higher, to move up. If markets continue to move up, this sector, these stocks which are looking good to me will perform much better in next 6 months, 12 months, 18 months time horizon. अगले साल चुनाव के पहले अभी एक करेक्शन के बाद एक बढ़िया रैली मार्केट्स में आनी चाहिए जिसके अंदर ये कुछ सेक्टर, कुछ स्टॉक्स जो मैंने आज डिस्कस की है ये तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे और भी चीजें परफॉर्म करेगी. तो इन स्टॉक्स पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, यू शुड लर्न व्हाट आई हैव सेड, क्योंकि मैंने मूविंग एवरेजेस के बारे में बात की है, आरएसआई के बारे में बात की है, पैटर्न के बारे में बात किया है, चैनल के बारे में बात किया है, ब्रेकआउट के बारे में बात किया है. ये सारी चीजें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने में काम आएगी. जो लोग इनको समझते हैं वो लोग इनको यूज कर सकते हैं, जो लोग नहीं समझते वो लोग को लर्न करना चाहिए, और जो लोग टाइम नहीं दे सकते उनको मेरे जैसे मार्केट एनालिस्ट के साथ टच में रह के हेल्प लेना चाहिए. नाउ वी विल सी वन मोर चार्ट. हमने लास्ट में एक और एक सेक्टर डिस्कस किया था, that was infra. Now if you see L&T, it's quoting at around 2200 levels. L&T के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये रैली का अभी शुरुआत है and this stock will outperform in this sector. L&T ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद मूव का स्टार्ट किया और L&T के अंदर अभी यहां से और ऊपर का मूव और रैली देखने को मिलेगा. In last 1 year, we have seen that L&T has given a move of around
almost from the levels of 1700 1600 levels to 2200 levels, यानी 500 से 600 रुपए का मूव कंटिन्यूसली एलएनटी में नीचे की तरफ से देखने को मिला है 1-1.5 साल के अंदर ही, which is a return of around approx 30%. ये स्टॉक आने वाले समय में और परफॉर्म कर सकता है। ये स्टॉक के अंदर भी ब्रेकआउट है, रिसेंट के सब हाइस तो ब्रेक कर ही चुका है, लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। दिस सेक्टर इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। सेक्टर के अंदर ये मेजर वेटेज वाला स्टॉक जो चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है, इसके अंदर यहां से एक बढ़िया मूव, बढ़िया रैली आने वाले समय में ऊपर की तरफ एलएनटी में देखने को मिलेगा। आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको डिप्स में खरीदारी करना चाहिए, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, डिप में इसमें लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए एंड कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर बीच बीच में इफ यू सी वी आर सीइंग अ करेक्शन ऑफ अराउंड 8 to 10%. So whenever you see such correction of around 8 to 10%, this correction should be used as a buying opportunity. This dip should be used as a buying opportunity और पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखें ताकि आप लोगों को आने वाले समय में इस सेक्टर से, इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा फायदा और एक अच्छा मुनाफा आप लोगों को मिल सके। आज इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें मैंने मार्केट से रिलेटेड डिस्कस करी है, जिसके अंदर सेक्टर्स भी आए हैं, स्टॉक्स भी आए हैं, लाइव चार्ट भी मैंने आपको सॉफ्टवेयर से दिखाया है जिसके अंदर स्टॉक्स में इंडेक्स के अंदर कैसा मूव आता है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। 5:20 ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक 10-15 मिनट क्वेश्चंस थोड़े से अब मुझे आप लोगों के लेने चाहिए और उसके बाद फिर ये सेशन को भी एंड कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे 1.5 घंटे होने आ चुके हैं और मैं भी कंटिन्यूसली 1.25 घंटे से बोल ही रहा हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियरली समझ में आया होगा, प्रेजेंटेशन क्लियरली आप लोगों ने देखा होगा, चार्ट्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस लिखते जाइए। आई विल स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। घनश्याम जी, आई होप आई बिलीव आप चार्ट्स बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको नॉलेज भी अच्छा है। ईएमए एसएमए दोनों यूज किया जा सकता है। जनरली मैं ईएमए प्रीफर करता हूं, वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है। सी व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, 5660 स्टडी मार्केट के अंदर है, यानी हर एक का अपना स्टडी है, हर एक इंडिकेटर का अपना इंपॉर्टेंस है, हर एक पैटर्न का अपना इंपॉर्टेंस है। सो आई बिलीव सब में घुसने से बेटर जो जिसमें आप लोगों का हाथ बैठा हुआ है, जो आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है, उसको आप लोगों को यूज करना चाहिए और सब चीजों में नहीं भागना चाहिए। अगर कोई एक पैटर्न, एक इंडिकेटर को भी अच्छे से यूज करेगा और उसको रिग्रेसली कंटिन्यूसली इफ दे स्टार्ट फॉलोइंग फॉर मंथ्स एंड इयर्स, they will have perfection in that particular indicator which will start giving them the result. But one has to be perfect in that reading. One has to be a disciplined trader in that particular indicator. Discipline के साथ अगर काम करोगे तो आप लोगों को पैसा बनेगा। So you can use EMA also, SMA also. Weekly में मैंने EMA use किया because I am comfortable with EMA and I feel EMA में ज्यादा परफेक्शन मिलता है। सुमित जैन, सुपर ट्रेंड प्रोवाइड्स अ बेटर सिग्नल। यस, सुपर ट्रेंड भी सिग्नल प्रोवाइड करता है, बहुत लोग सुपर ट्रेंड भी यूज करते हैं। यू कैन यूज सुपर ट्रेंड, उसके अंदर आप लोग को कुछ करना नहीं होता है, सीधा सिग्नल मिलता है, अकॉर्डिंगली यू कैन यूज। घनश्याम जी, यस, एलएनटी कैन बूम। Milind Joshi ji, any specific comments on bank PSU? See, I've already said that PSU sector is looking good to me. PSU banks are looking good to me. I feel next couple of months are of PSU sector, PSC sector. Stock specific बात हम करेंगे नहीं, so बहुत सारे लोग stock specific questions पूछ रहे हैं, so stock specific questions please मत पूछिए। आप
और कुछ डिटेल चीजें पूछिए जिससे आपका नॉलेज बढ़े, जिससे आप यूज कर सके। और एल्स आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। जहां आप जाओगे सोशल मीडिया पे वहां आप मुझे पाओगे, चाहे फिर वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। तो वहां पर हमारे रिपोर्ट्स भी रेगुलर होते हैं, वहां पर मेरे अपडेट्स भी रेगुलर होते हैं, वहां पर भी आप जाके देख सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी वी गिव रेगुलर रिसर्च रिपोर्ट्स, सो यू कैन फॉलो देयर ऑल्सो। एंड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक WRC पे जहां पे मैं अभी कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक बात करना इज नॉट गुड, स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज देना इज नॉट गुड। इसके लिए आई एम अगेन सेइंग, ये जो भी हमने आज डिस्कस किया, दिस इज फॉर नॉलेज शेयरिंग पर्पस। प्लीज इसको कोई रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिएगा। परसों मंडे मार्केट खुलते ही ऐसा नहीं हो कि आप सब LNT के ऊपर टूट पड़े और उसके ऊपर खरीदारी कर लें, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। सो PSU, मिलिंद जोशी जी, PSU sector is looking good to me in short. किरीट मालंकर जी, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट TCS एंड IT सेक्टर। चार्ट्स का रीडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पेशेंस इज रिक्वायर्ड। शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो रातों रात कुछ नहीं हो सकता। CA प्रैक्टिस जैसे आप लोग करते हैं तो रातों रात या 1 महीने में पैसा नहीं कमा सकते। सालों की मेहनत, सालों की स्टडी, कंटिन्यूअस सर्विस, उसके बाद क्लाइंट बनता है, सेटिस्फाई होता है, तब जाके वो ईयर ऑन ईयर आपके साथ रिन्यू करता है। इसी तरीके में शेयर मार्केट से भी अगर आपको पैसा कमाना है, यू नीड टू हैव पेशेंस, you need to have vision, you need to have long term view, then only you can make money. Short term volatility, short term corrections आते हैं, उससे जो घबराते नहीं है वो लोग शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाते हैं। बहुत लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। प्रेजेंटेशन के लिए, व्यूज के लिए, थैंक यू वेरी मच। लाइव अप्रिशिएशन मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। Kirit Malankar ji, you want to learn chart reading technique. See, chart reading technique you can learn by reading books. There are various books available on Google. Market में भी मिलता है. Technical analysis by John Murphy, pattern analysis, technical analysis का कोई भी बुक, कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उन वीडियोस में many times I speak about charts. आज भी मैंने चार्ट्स के ऊपर मूविंग एवरेजेस का बोला है, पैटर्न का बोला है, इंडिकेटर्स का बोला है, फिर ब्रेकआउट्स के बारे में बात किया है। ये सब चीजें आपको रेगुलरली अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको चार्ट समझ में आएगा। रीडिंग चार्ट इज नॉट एन इजी टास्क। CA क्लियर करने में 3 साल भी लगते हैं, 4 साल भी लगते हैं, 6 साल भी लगते हैं, 10 साल भी लगते हैं। चार्ट रीडिंग भी ऐसी ही है, उसको समझने में, उसको लर्न करने में 6 महीने भी लगते हैं, साल भी लगते हैं, 1.5 साल भी लगते हैं, 2 साल भी लगते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना आप अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, जितना पैशनेट आप रहेंगे, उतना आप जल्दी रीड कर पाएंगे और उसको आपको प्रैक्टिकली यूज करते रहना होगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर दैट इज गुड टेक्निक विच यू आर यूजिंग गुड फॉर यू और नॉट। सुनील पारेख जी, पावर सेक्टर इज लुकिंग गुड। थोड़ा सा कंसोलिडेशन में अभी ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम करेक्शन और सम डिप, then you should initiate long positions in power sector. Manisha Gupta ji, for a small investor, how to decide when to sell? Very good question. Selling is very important part of the market. खरीदना सबको आता है, लेकिन सेल करना किसी को नहीं आता है। हमारे पास पैसा है, हम जब चाहे तब मार्केट से खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन बेचे कब? प्रॉफिट में बेचना, कॉस्ट पे बेचना, लॉस पे बेचना, that is an art. One need to understand the art of selling in profit, at cost or in loss. Sometimes selling in loss is also a smart strategy. So जितने लोग अभी यहाँ पे सुन रहे हैं, please understand and learn the art of selling. जब तक आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नहीं, बुक्स के अंदर ही प्रॉफिट दिखेगा। सारे CA है, सबको पता है बुक्स के अंदर प्रॉफिट दिखने में कुछ फायदा नहीं होता है। जब तक वो प्रॉफिट आपके पॉकेट में या आपके घर में नहीं आएगा, तब तक उस प्रॉफिट का कुछ फायदा नहीं है।
So profit booking is very important. Before taking a position, you should know, you should decide, you should finalize कि आपको इसमें profit booking कहाँ करना है, क्या क्राइटेरिया, क्या रीजनिंग से आपने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया था, आपका पर्पस क्या था एंड आपका टारगेट क्या था. Once that target is done, you should book profit. Or if you are getting a decent profit in short-term time horizon, 1 week, 2 months, 5 months, 6 months, you are getting a decent return which you don't get anywhere else or in any other asset class, then you should book your profits. अगर आप प्रॉफिट बुक करना नहीं चाहते और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, then you should use ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस. 100 रुपए पे अगर आपने कोई चीज खरीदी है, अगर वो 150 रुपया हो गया है एंड योर होराइजन इज 2 year, 5 year, then you should keep increasing the trailing stop loss. 100 से 120 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आ गए, भाव ऊपर बढ़ गया तो 140 पे लेके आ गए. नाउ दिस इज आई एम जस्ट सेइंग एज ए वेग एग्जांपल, just hypothetically. These levels should be defined on the basis of technicals. चार्ट्स के बेसिस पे ये डिफाइन होता है कि आपको आपका स्टॉप लॉस कितना रखना है, कैसे रखना है और किस होराइजन के लिए रखना है. तो ये चीजें आपको समझना होगा. जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपका प्रॉफिट बुकिंग होगा नहीं, और जब तक प्रॉफिट बुकिंग होगा नहीं तब तक पैसा बनेगा नहीं. घनश्याम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग ऑन टीवी मीडिया एंड ट्विटर. जो लोग को चार्ट रीडिंग समझना है, जो लोग को प्रिडिक्शन समझना है, वो लोग यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं. फार्मा सेक्टर अभी कंसोलिडेशन फेज में है. इट विल टेक टाइम. वेट फॉर द फार्मा सेक्टर टू गिव ब्रेकआउट, देन यू शुड टेक पोजीशंस. Oil marketing companies will take time. PG Walecha, you have asked your question on oil marketing companies. Oil marketing companies sectors stocks are looking weak. It will take time. EV ka scenario is there, but EV will take longer term time horizon to perform, to develop the mindset of people. But no doubt it will have impact on oil marketing companies, and at present all marketing companies are in sideways towards corrective mode. Thank you very much for saying good words about this session. PSC sector we have already discussed. Hiral Kumar Kevadia ji, there are many organizations which are using or giving algo trading platform. So if you want to put your strategy, you can put your strategy in algo trading platform, in algo system, and accordingly if your strategy is profitable, you can make money from the algo trading. But in algo trading you need to sorry. But in algo trading, you need to be sure that your strategy is right, because any strategy which you are using will not work for a longer period of time, because system understands and system accepts that strategy. So you need to keep changing your strategy. Stock specific better we should avoid, like Adani groups and everything. मनीषा जी, मिलिंद जी, घनश्याम जी, बहुत लोगों को एप्रिसिएशन के लिए थैंक यू वेरी मच. और भी अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, सो वन कैन आस्क, बिकॉज इन नेक्स्ट आई थिंक 5-10 मिनट्स वी शुड एंड द सेशन. इंस्टीट्यूट से कोई अभी सुन रहा है मुझे, प्लीज वन कैन. Yes. Hello. Yes, Sumeet ji. Yes, I am there. या सो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस और लेके फिर सेशन को एंड कर सकते हैं. Yes, यदि सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं तो ये अपने कर सकते. अच्छा पिंकी जी, सर जैसा बोले. नमस्ते पिंकी जी. सभी है. Yes, no problem, Sumeet ji. Let us see if there is anything. Otherwise, we will be able to close the session. I think I have taken lot of questions, Murtuza ji. अभी भी ले रहा हूँ और questions. ठीक है. So we also recognize presence of regional council member Ketan Sayya and Pinky Kedia, and maybe Rudesh, if you can carry out a formal vote of thanks. Sure, sir, sure.
Thank you so much. I think it was an amazing session today. And thank you so much, Sumit ji, for this amazing guidance. I think it was an excellent way of knowing a lot of things. And the number of questions shows that how deeply that you've actually taken the entire session. Thank you so much. I think this was a wonderful seminar in loving memory of Sunil ji. That we remember. Thank you so much, everyone. Thank you so much, WRC Chairman Sir, Pinky Madam, Ketan Sir, and Shweta Ma'am as well for being there. Thank you so much, all the participants, for joining in. Thank you very much. So can I leave? Thank you, Sumit. It was very good session, actually. Thank you, इतने Pinky ji. और पैशन से मैं- आप इतने पैशन से जो बताते हो ना, वो बहुत कमेंडेबल है आपका. नहीं, थैंक यू जी और थैंक यू वेरी मच। और मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस शायद हम लोग ले भी नहीं पाए, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस लेना इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इट्स वेरी डिफिकल्ट, और जब गला खराब हो तब और भी डिफिकल्ट होता है। more than 85 क्वेश्चंस है. जी जी जी। इसका नहीं, मतलब thank लोगों ने you. इंटरेस्ट लेके सुना है. आप जो बोल रहे थे ना कि किसी कोई दिखता नहीं है तो पता नहीं चलता कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इतने क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि सबने ध्यान से सुना है आपको. नहीं, बहुत अच्छा लगा सी, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बीच में कुछ पार्टिसिपेंट्स तो कंटिन्यूअसली बस कर रहे थे, तो उससे ये भी पता चला कि प्रेजेंटेशन बीच में हैंग हुआ था। सो बहुत अच्छा लगता है सी, जब इंटरेक्टिव होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों ने भी 1.5-2 घंटे आपके दिए, मैंने भी 2 घंटे दिए, तो ये पर्पस सॉल्व होता है, पर्पस का रिजल्ट आता है। और इतने लोगों ने इंटरेस्ट दिया, उससे तो मुझे ये समझ में आया कि मेजर पीपल आर इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट एंड ऑल आर इंटरेस्टेड। और कितने लोगों ने मुझे लिखा है कि वी आर फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया, यानी, और एक जने ने तो आई थिंक वन इज यूज माय स्लोगन, सेल को सेल नहीं करना है। तो दिस शोज दैट पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड दे वॉच रेगुलरली। तो सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमित. सो कैन आई लीव? यस. थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।